Well, this is another version of the Clash of Titans for you guys. In case you've not watched that movie, surely you watch that up, and also this one because we've got the giants colliding again. There you have it. Welcome once again, folks. You are watching the eISL Season 2, brought to you by Nordwin Gaming, and I'm joined along with TT, with just waiting to watch the matchup between Northeast United FC taking on Mumbai City FC. TT, tell me about the excitement. एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसको अगर नापने के लिए कुछ मशीन होता तब शायद पता चलता कि एक्साइटमेंट कितने लेवल पे है। बट अभी मैं देखना चाहता हूँ कि वो सैकी वर्सेस इमाद सरांज के साथ क्रशर या फिर वो चेंज भी अगर हो जाए, दैट्स ऑल्सो ओके, क्योंकि चारों के चारों प्लेयर्स बहुत अलग कैलिबर के हैं। कोई भी किसी के साथ भी भिड़ जाए वो सेम मजा आएगा। तो देखते हैं कौन किसके साथ भी लाइक भिड़ने वाला है। Yeah, it's going to be really interesting one, and let's take a look. Let's find out, and who's going to go first, who's going to go last. So it's going to be Saranj Jain opening things up against Saki, and Imad will have his hands over Crush. I mean, that game number 3, ooh, that's going to be dripping. No caps over there. I mean, these two players, this is the match that I've been waiting for a long time. And I really would want this game to come down to a decider. I'm sorry, folks. I'm sorry if I sound too cruciating there, because I don't want it to end in the first 2 games. So Ranjan, if you want to lose, you can lose that one against Saki. You can drop that, but better hope you win the co-op game. But whatever it is, even the co-op matchup, TT, it's completely stacked. And every single one of them, it's very difficult to pick a favorite fixture amongst the 3 that we have, because both these teams are amazing on their individual matchups. And let's not forget how good they are in their co-ops as well. Now, talking about both these teams' run, especially Northeast United FC, I think I have had a rather more better time, because Northeast United FC, this is one of those clubs that just took that 1L from Bengaluru FC, and ever since haven't lost a single game. Have had a flawless run like FC Goa. Whereas Mumbai City FC have had a different affair so far. 5 wins, then 2 draws, and there has also been that 1 loss. And who did that to them? That was FC Goa. हाँ, एंड उसी जगह पे देखिए, पिछले गेम की अगर बात करें जो कि हम लोग को मुंबई सिटी एफसी की तरफ से देखने के लिए मिला था, वो मोस्ट प्रोबेबली बैंगलोर एफसी के खिलाफ था। सैकी गए थे चरणजोत के खिलाफ। सीजे के साथ जब सैकी का वो कोलाजन हुआ था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि सैकी कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेयर है जो कि बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है एंड बहुत ही अच्छे से वो कहीं ना कहीं घुल मिल जाते हैं सिचुएशन के ऊपर। उनके ओपोनेंट कैसे है उस हिसाब से वो स्टैट बनाते हैं। और पिछली बार क्या हुआ था कि वो सीजे के खिलाफ सीजे के ही पेस से गए थे, सीजे जैसा ही एग्रेशन के साथ गए थे, जिसकी वजह से सीजे को खुलने का उतना मौका नहीं दिया था। आज करेंगे कि थोड़ा ट्रेडिशनल जो फीफा हम लोग बात करते हैं उसके ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो मे बी सैकी के पास भी एक बहुत अच्छा चांस है इस गेम को जीतने का। Yeah, and considering the fact that Mumbai City FC had beaten Bengaluru FC, and Northeast United FC were beaten by Bengaluru FC, so you can do the calculation there, right? But that was long behind, right? That happened way earlier, and things have changed. Northeast United FC have been looking ever so strong, but Mumbai City FC cannot really rule them out. Saki and CJ's matchup was an absolute cracker. I think it was that winner that CJ scored in those final dying moments of the game, and eventually, still, despite that, they went on to win the co-op, and Crusher besting out Shagnik. But right now, Northeast United FC from left to right, and MCFC from right to left. Actually, just pass on the ball. Did not really succeed, but for now, you could see Northeast United FC starting to take things a little slow. Like you said, a conventional FIFA being played by Saranj, but he's also has added a few modern touch. And as he keeps likes to keep things simple, and wanted to dribble through, but the power in that shot was completely missing. Yes, and उसके वजह से इधर जो चाह रहे थे या फिर जो प्लानिंग था वो कहने की हुआ नहीं। बट
देखिए इधर दोनों ही क्लब्स चाहेंगे ये शुरुआत जो है वो जीत के साथ हो। एडर मिलिटाओ को खिलाया जा रहा है, हालांकि मिलिटाओ की जगह पे माल्डिनी है। माल्डिनी फुटबॉल दे कार्ड वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिख रहा है, लूशियो बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिख रहा है, बट फिर भी जो विश्वास है वो एडर मिलिटाओ के साथ दिखा रहे हैं इधर सैकी। और सैकी को हम देखें कि बहुत बार इंटरेस्टिंग कार्ड्स वो लेके आते हैं, बट विद कैप्टेविया लेफ्ट हैंड साइड से रन निकालने की कोशिश था, जो कि अभी के लिए तो नहीं बना पाए थे क्योंकि ये टैकल आया था। बट देखिए मौका अभी तक टला नहीं है, अभी भी खतरा मंडराता हुआ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के गोल के ऊपर। अभी भी बॉल छीना गया है तो क्लियरेंस नहीं दिखा, बीच से निकल जाएंगे, करने की कोशिश था और वैन डे सार कुछ भी करते हुए जस्ट फिंगर टिप्स पे लगा के बॉल को रोके, नहीं तो पहला गोल आ सकता था मुंबई सिटी एफसी की तरफ से। Man, that could have been really devastating, to be honest. Not gonna lie, things would have completely changed. And yeah, Saransh Jain has realized that he needs to be watchful, needs to be careful a little bit more. And now, where does he go from here? That's the big question. Still 20 minutes pass by. Both these teams are looking to create chances, and you could see them. The sparks flying with Kylian Mbappe. This time will take a driven shot. But Van der Sar comes to the rescue once again, TT. Yes. And देखिए इधर ये जो प्रेशर बैक टू बैक बनाया जा रहा है, इसका फायदा कहीं ना कहीं जो है वो मिलता हुआ दिख सकता है। एम्बापे, रोडोली पहले देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे इधर। सरांज को हमेशा इधर रेडी रहना पड़ रहा है कि कब आ जाएगा शॉट, कब आ जाएगा वो ड्रिबलिंग, कुछ स्किल मूव्स, सबके लिए वेट करना पड़ रहा है। बहुत शानदार हाई प्रेसिंग चलता हुआ मुंबई सिटी एफसी की तरफ से, और कुछ इसी के बारे में हम लोग बात भी कर रहे थे कुछ देर पहले। एग्रेसिव गेम तो दिखेगा सैकी की तरफ से, क्योंकि सैकी वो अभी फुल्ली कॉन्फिडेंट है। और सीजे के साथ हालांकि वो हार जरूर गए थे, लेकिन कंपटीशन काफी ज्यादा तगड़ा था और आखिरी मोमेंट पे उन्होंने गोल कंसीड किए थे, दैट्स व्हाई स्कोर लाइन चेंज हुआ था, नहीं तो ड्रॉ भी हो सकता था। बट इस बार वो बिल्कुल भी सरांज को जगह ही नहीं दे रहे। लेकिन फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे बॉल मिला है सरांज को, इधर से कैपिटलाइज कर सकते हैं विद एम्बापे राइट हैंड साइड से रन निकालते हुए। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी रोनाल्डिन्हो पोजीशन पे आ चुके हैं टुवर्ड्स रोनाल्डो। एम्बापे शॉट नहीं लिया गया अभी तक, 1-2 चलता हुआ, जो कि सरांज काफी अच्छे से करते हैं। और नहीं, फाइनली बॉल जाएगा और सैकी कहने की थोड़ा अभी चिल कर सकते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन बना था वो बहुत ज्यादा प्रेशर देके गया इनको। Yeah, I think it's this kind of looking quite end to end, to be honest, right? You're watching these two players. Both of them have been playing around the midfields, have been relying on those through passes, a lot of space, in fact, for that from that left wing. And yes, he realizes that Saki instantly wants to capitalize, takes that shot, but unfortunately could not beat the keeper. I mean, Van der Sar, Saransh Jain, I don't know if he's had a pep talk with him personally, because the kind of plays that he's making at least has kept Northeast United FC still at bay. Kept them in contention and have held MCFC at bay, because 3 amazing saves by him. Where you see now Kylian Mbappe with R9 takes that shot back on towards Lionel Messi. With Mbappe again, a little bit of a step over, finding that room, maybe trying desperately to seek R9, but eventually will have to settle with Ruud Gullit. And you could see again Saran's back to his old ways, where he constantly just keeps passing the ball. But Saki, he's come well prepared. Yeah, but देखिए Saki one more time, इस बार थ्रू खिलाया गया है towards कैप्टेविया। मेसी पहले जवाब पास हो सकता था, बट बेलिंगम, इसीलिए काइंड ऑफ बहुत से प्लेयर्स बेलिंगम को खिलाते हैं। उनके फिजिक और उनके हाइट कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज्यादा
बहुत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है गेम के अंदर, वो चाहे हेडर हो, चाहे वो मिडफील्ड पे एक स्तंभ की तरह, एक पिलर की तरह खड़े होना हो, वो काफी अच्छे से करते हैं। इस बार फर्स्ट हाफ देख के एक चीज तो पता चल रहा है, मे बी पोजीशनिंग इधर ज्यादा था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास, बट जो इफेक्टिवनेस देखने के लिए मिला मुंबई सिटी एफसी की तरफ से, लाजवाब। एंड इसीलिए मैं सीजे के साथ बार बार कॉम्बाइन कर रहा था, क्योंकि सीजे भी एक भी शॉट अलाउ नहीं किए थे सरांश के तरफ से उनके एकदम फर्स्ट गेम पे, जो कि eISL का डे नंबर 1 था। और सेम चीज इधर सैकी की तरफ से भी अभी भी चलता हुआ। एंड लेट्स सी लाइक सेकंड हाफ पे क्या होता है। Yeah, I think so far I've kind of liked how Saki has been playing, and that is quite contrary to how he usually plays, right? Saki has always been the epitome of conceding first and then scoring next. And this time, so far, the deadlock hasn't been broken. At the end of the first half, in the second half, things might look to change, because Saki might have had a chance with Crusher. And I think Dougal pointed that one out always. You know, these two players, you know, are brothers. And they keep boosting each other so much that despite even Saki sometimes dropping games, Crusher's like, bro, we got this. You know, that is so much important, especially when you head into a co-op. You need to reset, get into a very positive mindset, and then only you'll win games. Now look at Saki, how he's creating so much of that space, and Saranj giving him that. Those wings being left vacant. Saranj is anticipating threat to be from a little bit of a box-to-box approach. But yeah, I think Mumbai City FC now deciding to keep on the possession, trying to get into the minds of Saranj, which is very difficult to breach in, right? And however, he's managed to break past his defense on 3 different occasions and has taken the shot, but has been saved by the grace of Van der Sar. But this time does not look like to be the case, as with Theo Hernandez. He takes the shot and Mumbai City FC have taken the lead. वाओ, व्हाट अ गेम। एंड या किसी ने भी नहीं सोचा था, शायद सराज ने भी नहीं सोचा था, उन्होंने शायद सोचा था कि एक एक्स्ट्रा पास आएगा, लेकिन नो, विथ थियो हर्नांडेज शॉट लिया गया एंड वो फिनिश भी हुआ। एंड ये सिर्फ 3 बार शायद हम लोग को मोस्ट प्रोबेबली देखने के लिए मिला है। एक बार हकीमी के साथ, 2 बार थियो हर्नांडेज के साथ इस पूरे एंटायर eISL सीजन 2 पे, जितना मुझे याद आ रहा है। ओवरऑल काफी अच्छा, इतने देर से जो प्रेशर बैक टू बैक क्रिएट करे जा रहे थे, फाइनली उसका फल मिला है। और इस बार दूसरे गोल के लिए जाते हुए, एंड देखिए पोजीशनिंग, देखिए क्या शानदार बीच से निकलते हुए दिख रहे हैं। और क्या एक और गोल आएगा, पर नहीं, सही टाइम पे इस बार वैन डाइक मौजूद थे, बॉल छीने, कंट्रोल में लिया, बट सारांश उनको कुछ अलग करना होगा। वो अपना सेम गेम दिखाएंगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा अलग खेलने की जरूरत है। लेफ्ट हैंड साइड से रोनाल्डिन्हो, लेफ्ट साइड पर ऑलरेडी मौजूद है थियो हर्नांडेज, लेकिन बीच पे मेसी को खिलाया गया टुवर्ड्स एम्बापे जगह बनाने की कोशिश, नो, बॉल फिर से मुंबई सिटी एफसी के पास। मुंबई कोशिश कर रहे हैं कि जो मोमेंटम धीरे धीरे सारांश बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको तोड़ा जाए और उसका कुछ इस तरीके से जवाब दिया जाए। आगे बढ़ चुके हैं, रोनाल्डो आगे जा चुके हैं, बट नो, वैन डर सार फाइनली 2-0 होने से बचाए अपने क्लब को। 66 मिनट्स का गेम ऑलरेडी पार होता हुआ, बट मुंबई सिटी एफसी वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे इधर अटैक करने से। जब जब मौका मिल रहा है तब तब वो प्रेस कर रहे हैं। Oh yeah, they're looking so relentless, right? And Saranj Jain, he has to sort of get into his old vibes. Cannot let Saki just get away with the pace of the game. Now a very good pass with Theo Hernandez. Needs to go for a ball roll. Does in fact with R9. Will take that shot and there you go. Just like that. Saranj Jain making this goal look so easy. And Northeast United FC are right back into the game. And this time it has been the other way around. This time Mumbai City FC have scored first and then right after have conceded. So both of them similar type of approach. Few changes in just those players. Pele instead of Messi, and rest almost same, a mirrored matchup as you can call it almost. But yeah, I think Saranj Jain had to hit on the counter. He realizes that Saki is not giving him a lot of opportunities. He's keeping a lot of possession in the second half, has been playing extremely well.
So he needs to do something out of the box. And when he does that, he's granted a goal, creates one for himself. And now we are back to ground zero, back to where we started. Both these clubs, one each. बहुत ज़रूरी था एक गोल की, फाइनली वो ज़रूरत हुआ पूरा अभी के लिए तो, क्योंकि इसके बाद जाके क्या होगा इस मैचअप के ऊपर तो किसी को नहीं पता, क्योंकि दोनों ही क्लब सिमिलरली कोऑप पे भी बहुत अच्छे हैं। इमाद एंड क्रशर दोनों ही बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, बहुत ज़्यादा गोल्स भी कर रहे हैं, एक गोल के साथ तो संतुष्ट रहते ही नहीं है, लेकिन इस गेम के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। अभी भी बाकी है आखिरी कुछ 15-20 मिनट, 15 मिनट, और इसके ऊपर कोई भी अगर एक सिंगल भी गोल करते हैं उनको एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, वो चाहे फिजिकली बोलिए, मेंटली बोलिए, सब जगह से उनको एक बूस्ट मिलने वाला है, और वो बूस्ट ज़रूरी भी है दोनों क्लब्स को ही। बट क्या वो ड्रॉ के साथ ख़त्म होगा या फिर कोई लेके जाएंगे, वो सब कुछ तो अभी इधर कहीं ना कहीं पता चलने वाला है। सो लेट्स सी। एज ऑफ नाउ बॉल मौजूद सरांज के पास, रोनाल्डो जो रोनाल्डिनियो, एम्बापे, इम्पोर्टेंट पोजीशन पे इधर टैकल आया थे उनकी तरफ से। Yeah, and you could see the amount of men that were there in that position, but now the ball stolen in a very crucial area. Back pass towards Hakimi. You can see Kylian Mbappe passed on towards Eusebio to Bellingham to Rudolet. Eusebio trying to go for a step over. Now, slowly but surely, Saranj is taking over. I felt he would have taken a shot, but with Ronaldinho went for Elastico and wanted to go for a shot right after. But this is the point where I felt Saranj kind of overthought. Because I felt there was a room with Ronaldinho where he could have utilized the pace that he had, gone with the momentum, taken a shot, would have taken a chance at least, because that would have sealed things for them. As now, Saki on his attack goes really long, shifts the sides. Theo Hernandez passes on towards Rudolet. Oh, this is brutal. This is brutal. He has to score, and he does. What a pass was that, and the shot equally amazing. And as a result of which, Mumbai City FC have gotten a lead over Northeast United FC. Wow. एक बार फिर से वो करके दिखाए सैकी, जिसके लिए शायद सब लोग वेट कर रहे थे मुंबई से। एंड फुल मुंबई, जितने भी फैंस हैं मुंबई सिटी एफसी के, सब अभी बहुत खुशी हो रहे होंगे, क्योंकि देखिए दोनों ही क्लब्स इस बार इस सीजन में बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। मुंबई सिटी एफसी, अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, जब बीच में थोड़ा बहुत सैकी का फॉर्म उतना चल नहीं रहा था, कभी कभार उसको छोड़ के, उसको अगर साइड रख दे, एज ऑफ नाउ जो फॉर्म दोनों ही क्लब्स का चल रहा है वो एकदम लाजवाब, और इस जगह से किसी के पास भी जा सकता था ये गेम। और सैकी फाइनली अपना जो पहला मैचअप है वो कहीं ना कहीं, पहला जो गेम है वो कहीं ना कहीं अपने तरफ लेके आते हुए दिख रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि वो पे क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि वो लॉन्ग बॉल्स, वो थ्रू बॉल्स दोनों ही साइड से आएंगे, बारिश होगा, बॉल इधर आसमान से टपकते हुए दिखेंगे और स्ट्राइकर्स भागेंगे और बॉल के लिए और गोल स्कोर करने की कोशिश करेंगे, वो होगा। लेकिन इस गेम पे जो अभी हो चुका है, ये मुंबई के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। Oh yes, I mean, CFs will be elated with joy because now things have gotten a whole lot better. Now this is one of those dream starts that they were on the lookout for and have gotten it. Now with barely just one more minute remaining into play, could be Saranjan's last attack, and it seems like Saki might have done it. No way he's letting the ball go, and such a crucial victory for Saki at this point, as Saranjan left scratching his heads, thinking how could he mess up on that defense there. Oh God.
because to be honest, that one little charge tackle, that one pass that went in through, that's gonna haunt him. But it's all right. I mean, for both these clubs, one thing for sure to assure you fans that they've made it to the playoffs. So this match is just to prove who's the better one with the other. So yeah, Mumbai City FC off to a brilliant start, but Northeast United, still aren't really out of the competition yet because they've got a very strong co-op game, and then we've got Imad coming to play, the star boy so far of eISL, and he's going to play against Crusher. And when two stars collide, the explosion is gigantic. बिल्कुल एंड कुछ उसी तरीके का फील आता हुआ दिखा. वो क्लैश का जो पावर है वो कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था इस पूरे थ्रू आउट द गेम, एंड वो हम फील कर पा रहे थे. वो इंटेंसिटी वो हम फील कर पा रहे थे. और वो आखिरी मोमेंट पे जो गोल आया सैकी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं लाजवाब था. और जैसे कि हम लोग पहले डिस्कशन भी कर रहे थे, शायद बहुत टाइम बाकी था, एक ना एक गोल आना ही था, और वो सैकी की तरफ से आया. बट एक चीज़ मैंने देखा है इस पूरे थ्रू आउट द सीजन, सारांश ज़्यादा गेम्स हारे नहीं है, लेकिन सारांश को अगर रोकना है और अगर सारांश को आपको समझना है तो वो पेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. सारांश ज़्यादा लाइक मैजिकल या फिर ज़्यादा हम लोग यही नहीं कह सकते कि बहुत स्टाइलिश कुछ करते हो. सारांश सीधा गेम खेलते हैं, और उस पेस के साथ, वो पासेस के साथ अगर आपने एक बार पेस मैच कर लिया, दैट मीन्स आप पकड़ सकते हो, जो कि सीजे ने किया था. और सीजे के साथ सैकी जिस तरीके से खेले थे उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि शायद सैकी का दिन हो, और वही हुआ. 2-1 के साथ सैकी इधर जीतते हुए दिखे. तो ये एक बहुत जरूरी, एक मस्ट विन कहने के सिनेरियो था दोनों ही क्लब्स के लिए कि शुरुआत जो है वो जीत के साथ करे ताकि एक एडवांटेज बने, और वो एडवांटेज अभी मुंबई सिटी एफसी के पास है. Yeah, and I think it's right and fair to say that Saki was the better player. Saki was the one who created better chances, and Saranch, he was kind of defending for the majority of the game. And every single time he went on attack, just barring like efforts on 1-2 occasions, I think out of which one was a goal scored, of course. He kind of looked a little lackluster. Again, Saki, he had to modify his plays, which he was eventually doing. But those were in those dying phases of the game. Those were those moments where it was like a desperate attempt. Had he done that a little bit earlier, maybe Saranch could have equalized. But I loved how Saki played tonight, and this is so crucial, especially when you're heading into the playoffs and when you beat a club like Northeast United FC, who haven't tasted defeat after that opener game. Then that's going to be such a huge motivation, or rather a morale booster for the MCFC fans and also for the players. But well, I think we are speaking too soon, because the co-op game could absolutely change the dynamics, because Northeast United FC have been in this situation a lot of times where they come back into the co-op and they create magic, and then you've got the supreme sorcerer himself, Imad, comes into play, and that matchup, Imad and Crusher, it is going to be a stellar collision, and by all means would be one of the best games of eISL. And folks, if you are a part of this, I'm pretty sure you should ring your friends over, because you should not miss out on this one. Trust me, you will regret it, because if you're developing interest in a game like FIFA, then this is one of those matches that you ought to watch. And watching it live, feeling the passion, feeling all that emotion, it kind of rings those bells, right? And who knows, you could just go on, purchase the game and try out for yourself, and next season we see one of you representing these clubs, because most of the people watching, I'm pretty sure they are fans of their own club, and this is where you get to live a part of that journey, right? Live a part of an athlete's career. And take an example. I think the best one would be Ben07. He had been a fan of East Bengal FC right from the very beginning, and who would have thought that one day that young lad is going to play for that club, be an athlete, and perform so well. Of course, there have been a few roadblocks, right? But still, that does not deter him from living his dream, from
getting a chance to represent, to be a part of that rich heritage and the history that their club carries forward. So yes, another way where you can not just support your club, but also be a part of the club and actively pursue in eISL. But yes, moving on. Next up is co-op game, and in co-op, both these teams are just so strong, and it's so difficult to pick out a favorite for me at least. आई थिंक देखिए इधर मेरे लिए मैंने लाइक जितना देखा है गेम इन दोनों ही क्लब्स के, मुझे लगता है कि अगर इस गेम को दो पार्ट पे डिवाइड किया जाए, एक है फर्स्ट हाफ एंड एक सेकेंड हाफ, मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ पे ज़्यादा बेटर हम लोग को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी को हल्का थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग पे कि वो एकदम फुल स्टेबिलिटी के साथ बैठे, तो वो टाइम लगता है। अभी तक किसी ने एक्सप्लॉइट नहीं किया था। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपोजिट में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है और उनके साथ अभी सारांश यानी इमाद जब दोनों एक साथ आएंगे, अभी हो सकता है कि सारांश को क्रिएट करने वाली है, क्रिएशन जो है वो इमाद करने वाला है, तो सिनेरियो जो है वो बहुत ज़्यादा फुलफिल। मुझे लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड गोल स्कोर कर सकते हैं, देन ये उनके लिए बेटर होगा। Yeah, I think they would try to do that. And somewhere at the back of my head, I really want Northeast United FC to win that. And nothing against MCFC fans. I just want to see the final game to be a decider. That's my only wish. As there you can see Northeast United FC from left to right will instantly score a goal. And this is where they've come with vengeance in their minds. And R9 making no mistake. Very well crafted one at that. Perfect synergy, perfect passing. And Mumbai City FC are just left watching. जैसे कि हम लोग कहीं ना कहीं सोचे थे कि जो होने वाला है वही हुआ, कि मुंबई सिटी एफसी को थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है इधर समझने में कि क्या होगा क्या नहीं, और उसके बीच में गोल स्कोर करना था और करके गए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। बट इस बार भारी है कि मुंबई सिटी एफसी कहीं ना कहीं एक कमबैक करे, बॉल अपने पास रखना चाहेंगे। वो थ्रू बॉल्स बहुत ज़रूरी है। शुरुआती कुछ टाइम, कुछ मिनट थोड़ा टाइम लेते हैं मुंबई सिटी एफसी, लेकिन उसके बाद हम देखे हैं कि वो 2 से 3 गोल जो है वो करते रहते हैं यूजुअली। तो मे बी शायद ऐसा कुछ सिनेरियो इधर बने और एक कहने की गोल आता हुआ दिखे। मेरा प्रेडिक्शन तो यही था कि फर्स्ट हाफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, सेकेंड हाफ मुंबई सिटी एफसी। बट फर्स्ट हाफ पे गोल तो हो चुका है, लेकिन एक गोल का फासला फीफा के अंदर ज़्यादा नहीं होता, ये कभी भी इक्वलाइज किया जा सकता है। Yeah, it can be done in just in a jiffy, right? And Northeast United FC have started it really loud and now are looking for the second one. Look at the ball control on Lionel Messi. Looks for that cutback and MCFC. Oh, barely survived. Van der Sar coming into rescue for them as they break out for a counter-attack with their own Lionel Messi. With R9 passing it on towards Ronaldinho. A run has been triggered on that right wing. But he's got his intentions on Messi. And he does so. And now could take a shot. Oh, found that room. And Mbappe wanting to go for a steal. So MCFC, they just don't bow down, right? They want to fight back. And that they're doing. And what they did was also right? I mean, with R9, whosoever was controlling him, made the right decision. Just had to take that one extra step. But Northeast United FC, they're keeping their defense intact. And now they break out for a counter. With Lionel Messi having a lot of passing options, a ball roll and a pass towards R9. Will take a shot, but this time a deflection coming out. And they get saved. अभी के लिए तो बच चुके हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा देर के लिए बचेंगे, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी दोनों का अगर पोजीशनिंग आप देखोगे तो वो दोनों ही मिलके प्रेस करने जा रहे हैं, जो कि डिफेंस में आपके लिए खतरा बना सकते हैं। एक को किसी ना किसी को तो कवर करना होगा। अगर आप दोनों मिलके एक साथ प्रेशर कर देंगे, वो भी डिफेंस लाइन को आगे लेके आके, देन आपको फॉर श्योर एक्सप्लॉइट किया जाएगा इमाद की तरह से, सारांश तो फिनिश कर ही देंगे। तो इधर देख के खेलने की ज़रूरत है। मुंबई सिटी एफसी डिफेंस के ऊपर स्पेशली उनको नज़र रखना होगा, और एल्स दूसरा गोल इधर ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन उसी जगह पे राइट हैंड साइड से इस बार काउंटर पे जाने की कोशिश, ये शायद तीसरा टाइम है जब राइट हैंड साइड से कोशिश किया जा रहा है मुंबई सिटी एफसी की तरफ से। लेफ्ट साइड थोड़ा ज़रूर ट्राई करेंगे, बट एज ऑफ नाउ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विद रोनाल्डिनियो
towards Theo to Bellingham. एंड इस बार मिडफील्ड पे थोड़ा 1-2 करने की जरूरत भी है क्योंकि डिफेंस लाइन खुला नहीं है. बहुत शानदार एक चैलेंज देखने के लिए मिला. हकीमी पेस काफी ज्यादा है प्लेयर के अंदर, वो अपने पेस को शो करते हुए. एक प्रॉपर बिल्ड की जरूरत है. बिल्ड वो क्लोज. Because you know, I think MCFC and Northeast United FC, I think they've just come in here to show us sheer spectacle. We don't see the ball staying in midfield for long. You know, both these clubs are utilizing their wingers and their fullbacks the fullest, right? The wingers, of course, the centre forwards also, you know, cutting through and playing as wingers there. But now with Jude Bellingham towards R9, finds that space on Mbappe, will take the shot, but it was a near shot, a near post shot. So Van der Sar being present over there will not trouble him much, but still, Northeast United FC managed to get a corner out of this one, and we'll go for a short corner with still Ruud Gullit fighting, just staying behind Van der Sar there, and now they're kind of exercising their options, but it goes in vain. Still, howsoever, they have managed to retain possession. Whoa. A huge heel to heel comes in with Ruud Gullit. Goes for a shot, and out it goes for yet another corner. देखिए वैन डर सार तो बाहर आए थे, पिछली बार कोशिश कर लिए लेकिन वो हुआ नहीं, तो इसी वजह से सेकंड टाइम नहीं कोशिश किए. शॉर्ट कॉर्नर के साथ गए बट बॉल छीन लिया जा चुका है. ह्यू हर्नांडेज के साथ कोशिश बहुत देखने के लिए मिला एंड फाइनली इतने देर के बाद जाके लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट विंग को इधर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश, बट पास निकालने का मौका ही नहीं दिए. बेहतरीन डिफेंडिंग फ्रॉम द साइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड. कोऑर्डिनेशन ऑन टॉप. कह सकते हैं कि यह वो क्लब है जिनका कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा, अगर थोड़ा भी ज्यादा हो फिर भी इनका ही है वो ज्यादा, क्योंकि हर एक टाइम इनका जो चेंज होता है प्लेयर वो बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट होता है. मेसी तो हकीमी. फाइनली लेफ्ट हैंड साइड पे थियो हर्नांडेज मौजूद. एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए काम कहीं ना कहीं हो चुका है. वो अपना एक गोल कर चुके हैं और फर्स्ट हाफ पे ज्यादा कुछ करने के लिए उनके पास है नहीं. वो अगर ज्यादा अटैकिंग पोजीशन पे जाएंगे, बॉल लूज हुआ, देन काउंटर आ सकता है. तो धीरे धीरे बिल्डअप होगा और वो धीरे धीरे बिल्डअप करते हुए देखने के लिए मिल भी रहे हैं. बीच से निकलेंगे रोनाल्डो विद द शॉट, बट वैन डर सार पोजीशन ज्यादा नहीं था, श्रिंक हो गया था एंगल, जिसके वजह से उतना ज्यादा थ्रेटन नहीं कर पाए. नहीं तो ये बहुत ज्यादा एक बेहतरीन अटैक था. Yeah, I think one thing for sure is that Northeast United FC have certainly been the better team in the first half, right? And Mumbai City FC have always been dancing to their tunes and have been only kind of going for those counter attacks a lot. That is one of the concerning issues that I feel, because it kind of reminds you of the previous game where Saki had constantly kept himself in control against Saranj. Now with Ahmad being added into the mix, Mumbai City FC have been looking a little off. And Mumbai City FC is one of those teams that, you know, has a really good co-op game. So this is the moment where they kind of just have a talk with each other, kind of boost each other's morals, and they know they can come back. Because look at the shots taken. 7 shots. How often do you see that in just the first half, TT? एंड स्पेशली इन को-ऑप गेम जिसपे आपके लिए गोल्स निकलना बहुत टफ हो जाता है, आप शॉट भी उतने ले नहीं पाते हो. बट इधर देखिए 7 में से कम इधर 5 शॉट जो थे वो शॉट ऑन टारगेट थे, जिसपे से एक गोल हुआ. तो ये कांस्टेंट प्रेशर बनाया गया था मुंबई सिटी एफसी के ऊपर. बट आई थिंक ये हाफ मुंबई सिटी एफसी का होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक खेले हैं दोनों ही क्लब्स, मुंबई सिटी एफसी सेकेंड हाफ पे बीस्ट बन जाते हैं. अगर उसको रोकना है सिर्फ शायद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ही रोक सकते हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन बना के खेलते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, दोनों प्लेयर्स के बीच में जो 1-2 होता है, जो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वो ऑन पॉइंट रहता है. एंड अभी तक तो मैंने उनको बॉटल करते हुए नहीं देखा.
तो या चांसेस काफी हाई है कि ये नॉर्थ ईस्ट लेके जाए, बट मुझे लगता है कि मुंबई के पास चांस रहेगा। अभी ऑफ साइड था, मुझे लगा अभी एक और गोल आया, पर नहीं, ऑफ साइड ट्रैप पे फंसे। लेकिन देखिए अटैक कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। The attack is on, and oh, we know who did that, right? That's a classic Imad, and he always tends to go for shots like this, and more often, sometimes also gets away with it. He scored some magical ones, but now Mumbai City FC are out for revenge, are in pursuit to find that equalizer. They would, of course, want to seal things over here, but we like drama. We want Northeast United FC to go for a win, and then that last, that last decider match, that will be one worth remembering. As now Mumbai City FC, they need to kind of get the control back into the game, need to control the tempo, which they are kind of unable to do so far, but they certainly have the caliber to do it. But Northeast United FC, they've been so quick, they've been so agile. Every single move, the way they've been dribbling the ball, especially getting past the defenders. And now, passed on towards Lionel Messi. A lob through pass being given to Ashraf Hakimi, a cutback. Just waiting for that shot. Wow! Wow, that fake shot over there, and then just drawing the keeper away, going away from him. This is only something that Northeast United FC can pull off. They get the second one over here, and a huge blow to MCFC's dreams of finishing it in the co-op game. फाइनली विद दिस गोल, जैसे कि आपने कहा, शायद कमबैक का जो भी रास्ता था वो बंद करते हुए दिखे इधर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। एंड कुछ इस तरीके का गेम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पूरा थ्रू आउट द सीजन दिखा के आए हैं अपने कोऑप पे, वो चीज एक बार फिर से दोहराते हुए। एंड अगर ये जीत गए, जैसे कि आप कह भी रहे थे कि जो नेक्स्ट गेम है वो फिर मजेदार हो जाएगा, लाइक क्रशर वर्सेस इमाद। ओह, कौन मिस करना चाहेगा? एंड आई थिंक लाइक ये एक ऐसा मैच होगा जिसके लिए कोई भी अपना काम छोड़ के बैठ जाएगा इधर स्क्रीन के सामने कि यार इमाद वर्सेस क्रशर हो रहा है। लेकिन उसके पहले ये गेम का जो स्कोर लाइन है वो यही बने रहना चाहिए। आई डोंट थिंक कि इधर कोई भी गलती करेंगे क्रशर, सॉरी इधर इमाद एंड सरांश, क्योंकि हम जानते हैं वो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है और कितने शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। बट फिर भी एक चांस कहीं ना कहीं रह ही जाता है इक्वलाइजर का, क्योंकि अभी भी 29 मिनट्स बाकी है। एंड क्या वो चेंजेस लेके आ पाएंगे गेम के ऊपर? एसबीओ को लेके आ गया है मेसी के जगह पे, तो वो चेंजेस कहीं ना कहीं करना शुरू कर चुके हैं। फ्रेश लेग्स दिख रहा है, तो अभी क्रॉसेस के लिए जाएंगे। बॉल पोजीशनिंग ज्यादा है, बट तीसरा गोल क्या ये ऑन लाइन है? बट नो इधर छीना जाएगा। बट देख के एक बार के लिए ऐसा लग रहा था मोस्टली ये तीसरा गोल होने वाला है नॉर्थ ईस्ट के लिए। Yeah, even I felt the same, right? With especially the run of form that Northeast United have garnered over here. So difficult to stop them, and for MCFC, you just left in awe to watch how good they are. But this could have been a cheeky one. But still, chance alive as with Ronaldinho tries to break in. But no, Van der Sar coming for the rescue once again. And at a certain area, you'd see few more pauses coming in, make a few more changes like they made earlier. And MCFC, they have to go all out, because at this point, Northeast United FC are looking nigh unstoppable. And the ball just going out of play. एज ऑफ नाउ जिस तरीके से मुंबई सिटी एफसी ने परफॉर्म किया है, देखिए उन्होंने ज्यादा गलती कुछ किया नहीं है, लेकिन ये ब्रिलियंस दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से। एंड स्पेशली जो गेम सैकी खेल रहे थे फर्स्ट मैच पे सरांश के खिलाफ,
अभी सारांश एंड इमाद खेल रहे हैं सैकी एंड क्रशर के खिलाफ, तो पूरा रोल चेंज हो चुका है एंड कहने की रिजल्ट भी चेंज हो चुका है। 2 गोल्स आ चुके हैं एंड इधर से आई डोंट थिंक कि और इक्वलाइजर आएगा। आपको क्या लगता है फिक्सेस? Yeah, honestly, to be I kind of agree with you. It's time we sort of prep up for that final game, that final showdown between Crusher and Imad. And this is one of those games that we will get to see much more even in the playoffs, right? So I'm pretty sure Mumbai City FC kind of have understood that Northeast United FC's co-op game is always a notch above. And it's not just the team plays, it's also those individual plays that they've been making. Their calmness, their composure that they're kind of maintaining, in that final third is something to be just admiring at, right? And that is how good these two clubs have been. With Jude Bellingham towards Pele. Mumbai City FC trying to find one more this time. We've seen Mumbai City FC, they have made that one little change that they've been trying to go for those long shots. And yeah, go for it, go for it. I kind of completely I'm in favor because Northeast United FC haven't really been giving enough opportunities to them in those final thirds, right? So might as well try your luck, get a green time shot, or maybe try and get a Trivela or a Phoenix shot also. Or maybe a power shot, anything, because if you get a little bit of room and you are able to do that, but this time break in with Eusebio and will score. I think Northeast United FC kind of got a little complacent over there, as a result of which Mumbai City FC go on to punish them. Now a draw here for Mumbai City FC will at least ensure that they kind of go out with that 1 point, even if Crusher loses to Imad. But Northeast United FC, they have no time to remorse, instantly going for an attack. And this has been one of those bigger problems that Mumbai City FC haven't really been able to address to, and will have to somehow work on their defense, especially against the bigger clubs. बट देखिए इधर जिस तरीके से ये पूरा सिचुएशन चल रहा है, एक गोल तो आ चुका है, दूसरे के लिए रिप कर रहे थे बट नहीं। ओह माय गॉड! इसी सेव के साथ मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस तो इधर 2 गुना 4 गुना बढ़ चुका होगा मुंबई सिटी एफसी का। उनको लग रहा होगा कि यस हमारे लिए बहुत कुछ शायद इस गेम पे बाकी है, क्योंकि ये बच चुका है, ये गोल नहीं हुआ। Wow. I was kind of left thinking how on earth could that not be converted. But regardless, Mumbai City FC could see that frustration creeping in a little bit. And they've gotten in Cafu, the player that I was looking so much for. And yeah, Mumbai City FC, one of the rather rarer teams to go for Cafu. And it's fine because considering how many runs they've been making with Hakimi, he's bound to get tired at some point. And who could be the best replacement? I mean, we've seen a few players also get in Atal, especially with the upgrade that he has got, the pace, and even that finishing attribute that he has. That 5-star weak foot certainly helps these clubs. But there you go. The final whistle has been blown, and Northeast United FC win this one, which leaves us with the decider game, the final matchup, the final showdown between Imad and Crusher, where now both these clubs are one each apiece in the overall fixture. But who gets away with the win? That's the big question. But for now, it is 2-1 Northeast United, clearly the better team. Mumbai City FC somehow managed to salvage a goal there, but that was pretty much it from their side. उसी के साथ ये गेम अगर इसके बाद जीत जाते हैं इधर कहने के इमाद एंड उसी के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अगर इधर से 3 पॉइंट लेके जाते हैं, देन इधर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आज ही टॉप पे आ जाएंगे। हालांकि एफसी गोवा 2 गेम्स कम खेले हैं, बट फिर भी आ जाएंगे। एंड आखिरी गेम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड एफसी गोवा के बीच में होने वाला है। बट जो गोल्स देखने के लिए मिले थे इस पूरे
इंटायर मैच के ऊपर। इसमें से ये गोल बहुत ज्यादा जो फेक किया, जैसे कि आपने भी उस टाइम पे कहा था कि वो फेक बहुत कुछ चेंज किया। अगर सीधा शॉट लेते तो मे भी सेव हो गया रहता, बट उसके बाद वो फेक बहुत ज्यादा शानदार था। दूसरी भी वो एक लाइक मैंने देखा है बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर जब स्ट्रीम करते हैं उन्होंने भी कहा है कि यूसुफ एक प्रॉपर सुपर सब है जिनको आप सब करके लेके आओ और वो आपके लिए परफॉर्म करके जाएंगे। और एक बार फिर से मुंबई सिटी एफसी के लिए वो देखने के लिए मिला। Yeah, I think Eusebio is kind of like David Ginola, but also offers you that nice pace, and he's got that very lean body type, right? He could quickly just get in through. Where sometimes I feel like Ginola struggles a little stocky. I feel personally, but Ginola nonetheless is also one of my favorite cards because I've had that opportunity to use him on loan, not just once but twice. The Foot Fantasy Ginola, I mean. And he is impeccable as well. So something similar is offered by Eusebio also, and that extra added pace I think has been one of the reasons why players are now opting for Eusebio a lot. And with the new Eusebio card, we know that is absolutely cracked. I mean, these players, imagine they're using it as super sub. And if I unpack Eusebio, he is going to be my best card for life. I'm not gonna let go. I mean, like, you play the entire 90 minutes. But yes, jokes apart, let's take a look at the scorecard. And this is where, folks, this comes down to the final showdown, Imad and Crusher. So in the co-op game, Northeast United FC, they did it all, right? What they had to do was first find a very crucial blow. They did that, and Mumbai City FC were injured. I mean, injured in the sense that they were kind of taken aback because it was just kickoff, and the first attempt only Northeast United FC scored. So they had come up with a statement saying that, hey, you might have won the first game, but don't forget that we are one of the best clubs when it comes to co-op. And they kind of played like that. So many chances. You could see by the end of the first half, 7 shots had already been taken, where in comparison, Mumbai City FC had just managed to get 1. So that clearly went on to show that Northeast United FC were the better team, not just in the first half also. I felt in the second half also they were controlling quite a lot of game. But yeah, there was a little bit of an improvement from Mumbai City FC, where we saw a change in their shooting style, where they were going for those longer shots. They were trying to get those passes right. But yeah, majority of the times I felt that they were not in control of the game, as a result of which Northeast United FC won this match. एंड फाइनली वो क्षण आ चुका है जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे। हाँ, सरांश एंड सैकी दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं जिनके बीच में ऑलरेडी एक गेम हो चुका है। लेकिन ये कुछ ऐसा है जिस गेम के बाद कहने की हम लोग कह सकते हैं पैसा वसूल मैच जो हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। दोनों ही एक गोल के साथ संतुष्ट नहीं रहते, ओपोनेंट को धो देते हैं गोल मार मार के। बट आज वो दोनों के दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ। इमाद एंड क्रशर, क्या होगा किसी को नहीं पता, मैं तो जस्ट एंजॉय करने वाला हूँ। Yeah, this match is one of those cosmic showdowns that we've been hoping to see. And right off the bat, look at Crusher. Oh, how? I thought he would just directly take a shot there. But opting for an extra pass, and that is where I think things went down the drain. Yeah, and एक्स्ट्रा पासेस की जब बात आता है तब कहने की इमाद उसको परख लेते हैं, क्योंकि वो खुद भी लेते हैं एक्स्ट्रा पासेस। तो बहुत ज़्यादा सिमिलर प्रोफाइल के काइंड ऑफ दो प्लेयर्स हैं जो कि थ्रू बॉल्स काफ़ी ज़्यादा खिलाते हैं, लॉब बॉल्स काफ़ी ज़्यादा खिलाते हैं, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऑलरेडी आ चुके हैं। इस बार प्रेशर ज़्यादा बना रही हैं। प्रेशर पिछले कुछ मिनटों पे 8 मिनटों पे ये शायद सेकेंड अटैक था और बहुत ही अच्छे से डिफेंड किया गया, शानदार तरीके से शील्ड किए बॉल को। बट इमाद अभी भी उनको मौका नहीं मिला है कि वो जाके वैंडेसार को टेस्ट करें मुंबई सिटी एफसी के गोल पे। तो वो कब होगा? आई थिंक बहुत जल्दी, क्योंकि जब उनको एक बार बॉल मिल चुका है प्रॉपर कंट्रोल के साथ, शायद वो बॉल तो नहीं गंवाने वाले हैं। राइट हैंड साइड पे मौजूद इधर रोनाल्डिनियो टुवर्ड्स रोनाल्डो, बट नहीं, रूडोलीद के साथ बेहतरीन एक इंटरसेप्शन, बॉल जीतेंगे और काउंटर पे जाने की भी कोशिश करेंगे मुंबई सिटी एफसी। I think we can see that intent from Crusher trying to play those lob through pass balls, right?
He's done that already on 2 occasions. Once it worked out, but kind of bottled it. But second time, it did not work out in his favor. But now with R9, you can see that triggered run. Intention was to give the ball towards Ronaldinho. But Imad was quick into anticipating that similar style of play. And, you know, Imad is one of those players who quickly adapts to the pace of the game. And not just that, he kind of tunes his style of play accordingly. So Crusher has to inflict some heavy damage right in that first half and needs to score 2-3 goals, because once Imad settles down, you know what he can do, right? So Crusher is also one of those players who has those similar traits, right? Now he started off with those lob throughs. You never know what he's going to do next. Just like this, you know, this was one of those uncanny passes which we haven't seen a lot, but had that worked out, could have clearly been a goal. But now Imad just taking a page out of Crusher's book with Lionel Messi. Nice ball control there with Ruud Gullit. Passes it on towards Ronaldinho with that heel-to-heel steal, keeps the ball and takes a shot and he misses. ये बहुत कम हुआ है कि वो मिस करते हुए दिखे हैं, बट फाइनली वो हो गया है कि वो उन्होंने मिस किया है. लेकिन इस बार देखिए क्रशर भी बीच में थोड़ी देर के लिए उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि यस वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है. तो यही गेम है, दोनों ही प्रेशर में खेल रहे हैं और ये प्रेशर तो आखिरी मिनट तक चलेगा. वो 90th मिनट तक हम लोग को ये प्रेशर बना हुआ देखने के लिए मिलेगा. बट इस बार के लिए मुंबई सिटी एफसी विद लियोनेल मेसी कोशिश, देखिए शॉट लेने का मौका नहीं दे रहे इधर इमाद. वो मैंडेसार को क्या टेस्ट करेंगे, उनको शॉट जो है वो गोल तक पहुंचने ही नहीं दे रहे. इमाद अभी भी बहुत ज्यादा कंट्रोल में, लेकिन इस बार पास पहुंचा नहीं टुवर्ड्स रोनाल्डो. बीच से छीना गया, लेकिन इधर मुंबई सिटी एफसी की तरफ से काउंटर पे मुंबई सिटी एफसी बहुत ही अच्छा सिनेरियो था, बट माल्डिनी के साथ बीच से इंटरसेप्ट करेंगे. और दोनों का ही गेम आप देख सकते हो, फिनिश तो हो नहीं रहा, शॉट लेने नहीं दे रहे, एकदम अटैकिंग थर्ड पे जाके बॉल ले लिया जा रहा है. तो हाँ, दोनों ही बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे जाके गेम खेल रहे हैं. Yeah, I think both of them are just clashing heads against each other, right? You could see those beautiful passes being made, those driven past, trying to split open the defense apart, and it's just not Imad. Imad has also had his hands over trying those lob through passes from the wings. Same had been done by Crusher. And let's not forget, both these players have kind of that similar style of play. Very calm, very cool as cucumbers. And, you know, it all, I think, will come down to who makes that one mistake and the other one ought to capitalize, right? It's going to be a very close affair. I don't think we're going to see a huge scoring game, but nice pass again towards R9. But you can see now Imad has started to understand what Crusher is up to. Again, a nice driven lob through with Mbappe, and will take a shot. And this time the magician doesn't miss his target, and Northeast United FC have taken the lead. फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जब इमाद हल्का सा स्माइल दे सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कितना टफ था. हम लोगों ने देखा है कितना टफ था उनके लिए भी ये गोल स्कोर करना, बट फाइनली वो लीड मिलता हुआ. बट ऑन द अदर हैंड क्रशर वो एक गोल के डर से या फिर डिफेंसिव खेलने वाले प्लेयर तो है नहीं, वो अटैक करेंगे बैक टू बैक, वो अटैक करते हुए दिखेंगे इधर. एंड फिर से एक बार देखिए राइट हैंड साइड से विथ रोनाल्डिनियो आगे बढ़ने की कोशिश तो था, बट इमाद बहुत ही स्मूथली डिफेंस कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इमाद जाके इधर फिजिकल अटैक कर रहे हो या फिर जाके टैकल कर रहे हो, वो जस्ट प्लेयर को लेके आ रहे हैं उनके बॉल के सामने और बॉल छीन लिया जा रहा है. एक बार फिर से पोजीशन चेंज, कॉर्नर हुआ है कि नहीं, यस कॉर्नर मिलेगा, शॉर्ट कॉर्नर देंगे, बॉल कंट्रोल भी रहेगा विथ लियोनेल मेसी. पास टुवर्ड्स बेलिंगम और कोशिश एक, ओह माय गॉड, वॉली शॉट लेने की कोशिश था, बट उसके पहले ले लिया गया. बहुत अच्छा गेम, बहुत ज्यादा. Yeah, I mean, both these Goliaths fighting out against each other, using their own set styles of play, and Imad just one step ahead. Crusher has to figure a way out. We haven't seen Crusher lose a lot of games. I don't remember
and he lost a game. I think would have been against FC Goa. That was pretty much it. But now Imad, this is what we love about Imad. You know what he did over there. I guess even 60 to 70% of players, even in the eISL, would have gone for a pass, would have gone for a cutback towards Arna. But he knew that he could take that shot, he could score a goal. In terms of possession, look at that. So evenly contested. Both these teams have taken 2 shots, but it was just that one goal that Imad had managed to score, which keeps him ahead of Crusher at this moment. But cannot rule away Crusher at all, because he's also a player you can never underestimate. He's done the impossible even in the past, and this time is faced with another arduous task, and he's up for the occasion. He's one of those players you would just know that yeah, he can certainly do it. I'm pretty sure Crusher is going to score an equalizer. I don't know who's going to get the winner though, but now Imad trying to take over this game with Lionel Messi finding a little bit of room. Wow! Wow! What on earth was that? You could see him just dribble past like that, and then that outside footed shot. Now that is something that only Imad can do, and that is why he's not just mine, but a lot of fans' favorite player. I'm pretty sure you might be from Mumbai City FC also, but you cannot stop admiring the sheer class and quality of goals that Imad scores. He's just not said to be a heart stealer. He's taken over the hearts of those ladies and now has taken up over us as well. Crusher in a whole world of trouble right now, TT. कोशिश क्रशर बैक टू बैक करते जा रहे हैं, लेकिन उनको निकलने का मौका ही नहीं दे रहे. और वो जो गोल था विथ मेसी, वो ड्रिबल किए उन्होंने, वाओ! लाइक क्रशर भी इधर ऑन कैम वही कर रहे थे. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है उस टाइम पीरियड के ऊपर जब उनका पूरा डिफेंस घेर के रखे हैं, बीच में बिना कोई डर पीएरएस हो चुके हैं इमाद. 2-0 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड शायद 3 के लिए जाते हुए, पर नहीं, इस बार लूशियो मौजूद. हकीमी टुवर्ड्स बेलिंगम. क्रशर बहुत ट्राई कर चुके हैं, बट वो शॉट प्रॉपर्ली लेने का मौका ही नहीं मिला है. राइट हैंड साइड से रोनाल्डिन्हो का रन, लेकिन नहीं खिला गया. हकीमी बहुत देर से ट्रैक कर रहे थे हकीमी के पोजीशन को, और नो पार्ट फिर से छीना जाएगा. गलत पासेस भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा मुंबई सिटी एफसी की तरफ से, स्पेशली क्रशर. देखिए, वो एक सदमा लग जाता है जब आप ऐसे गोल कंसीड करते हो जिस पे आपके पास कुछ करने के लिए रहता ही नहीं है. बट फाइनली क्रशर विद दिस गोल, उनको थोड़ा सा शांति जरूर मिला होगा ना. आप उनको देख सकते हो कि इतने देर के स्ट्रगल के बाद, इतने देर से कोशिश करने के बाद फाइनली एक जो शॉट है वो प्रॉपरली पावर के साथ ले पाए, और वो फिनिश हुआ बैक ऑफ द नेट. 2-1. क्रशर ये बता रहे हैं कि गेम अभी तक सेटल नहीं हुआ. Yes, and all he had to do was just keep things simple, right? A good pass on towards Mbappe, and what he's done is, I think Imad's playing R9 as his striker, and Kylian Mbappe as a centre forward there. But this time, I think Crusher had his Mbappe on that striker position. All that he had to do was just receive the ball, go for a step over, find that extra little space, and just rocket past the ball. And I knew that Crusher is definitely going to score a goal. And he just can't, Imad, in fact, can't get away with it. Now it has completely opened up. Crusher's gone ultra attacking, and he's got blood in his eyes. You can see, would not want to let this go easy for Northeast United FC. A very important goal at such a crucial moment of the game. This changes it all. All that Crusher needs to do is manifest and carry forward with the momentum. Now this is a nice pass. Can Mbappe make it? No. Imad just charging his keeper, and he gets the ball. माद उनको यही कोशिश करना है, एटलीस्ट वो ये या तो एक गोल करे या फिर बॉल अपने पास रखे, उससे ही कहने की चाहिए ये 3 पॉइंट्स उनके पास आ सकता है. बट देखिए, शॉट लेंगे, बट
क्या ये ऑफसाइड था? यस, ये ऑफसाइड था। रोनाल्डो ऑलरेडी ऑफसाइड पोजीशन पे थे, जिसकी वजह से इधर ऑफसाइड मिला है। बॉल कंट्रोल आएगा क्रशर के पास। क्रशर, ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 19 मिनट, और 19 मिनट में एटलीस्ट एक गोल स्कोर करने की ज़रूरत है। अगर करेंगे देन ये गेम ड्रॉ होगा। 2 गोल स्कोर करेंगे तो जीत के लेके जाएंगे, बट अगर यही स्कोर लाइन रहा तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 3 पॉइंट लेके जाने वाले इस पूरे मैचअप से। बहुत बहुत ज़्यादा लाजवाब अभी तक पूरा सिचुएशन देखने के लिए मिला है, बट ऑन द अदर हैंड देखिए इमाद भी रुकने वाले नहीं है। क्या शानदार स्मूथली जस्ट पास निकाल रहे हैं। एक पास, ओह माय What? व्हाट नो, जस्ट उनके लिए मुझे भी बुरा लग रहा है। अनलकी। Oh my God! Even Imad can't believe that he scored that one. Even Imad can't believe that that went in. But this is it, right? This is it. He's a magician, and he is quite famous to craft goals like this. And this is one of many, right? Beautiful build up, nice lob through pass, beating the defender. In fact, the right back there going whizzing past and just closing in through. Just when you would expect him to pass, he says and takes a shot, takes his chance, and this is why we urge players take a shot. What could go wrong at the worst? We'll get a corner, or sometimes we'll get converted into a goal. वैंडेसार उन्होंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया, बाय द वे, एज आई अगर मैं बोलना चाहूं, पूरा कोशिश किया, बट वो प्रेशर पे पीछे ढकेले, थोड़ा जगह था, उधर से बॉल अंदर चला गया। और फाइनली ये हम कह सकते हैं अभी कि यस, 3 पॉइंट्स इस बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड लेके जाने वाला। टाइम ज़्यादा है नहीं इक्वलाइज करने के लिए, और इतने कम टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा कम सिनेरियोज हुए हैं जिधर गोल कंसीड किए हो इमाद, वो भी बैक टू बैक 2। तो चेंजेस किया जाएगा, यूसीबीओ को लाया गया है, अलोवारन देखने के लिए मिलेंगे, एंड काफू। तो 3 चेंजेस आया मुंबई सिटी एफसी की तरफ से। यूसीबीओ पिछले बार भी एक गोल किए थे कोऑप पे आखिरी कुछ मोमेंट पे, क्या इधर एक बार फिर से होगा? एम्बापे टू यूसीबीओ, यूसीबीओ द शॉट, हार्ड सेव। You know, Crusher still cannot believe that he would concede a goal Wow. like that, but gets himself right back in. Do we still have action from Mumbai City FC? Because every single time Imad scores, Crusher responds back in fashion. All that Crusher needs to do from now onwards is to find another one goal with goal in through, and then we might see both these clubs sharing points. And even if that happens, I'm absolutely fine with that. I'm absolutely going to be happy, because both these clubs are just so good that it would be unfair sometimes to see one of them to be the decisive winner. But regardless, Imad has shown sheer class, and Crusher has been somehow managing to scrape through a few goals. And now again with Ronaldinho just going in through with that step over multiple times, did that. But we've kind of seen that little nerve coming up, right? Can't chain the same skill moves, will not be as effective as earlier. But regardless, you know, with just mere 7 minutes remaining, let's see if Crusher can find one more. He's got some room on that left wing, but before he could pass, Hakimi comes in for rescue, and Imad breaks free, but no, an offside. फाइनली आखिरी 5 मिनट इस पूरे गेम के बचे हुए हैं, जिसपे बॉल कंट्रोल अपने पास ही रखना चाहेंगे इमाद, क्योंकि इमाद को एक चीज तो पता चल चुका है कि इस बार उनके साथ जिनका मैच है वो इतना इजीली छोड़ने वाले प्लेयर है नहीं। बहुत अच्छा मौका, बेहतरीन पोजीशन, 3 प्लेयर इधर अटैक पे जा चुके हैं, शॉट गोल भी होगा, उसी के साथ ड्रॉ करते हुए दिखे हैं। व्हाट अ मैच, फाइनली पैसा वसूल गेम। वाओ, क्रशर एंड इमाद, स्पेशली क्रशर, 2 गोल से पिछड़ने के बाद अगर आप इतने कम टाइम पे इमाद को 2 गोल स्कोर कर सकते हो, यस, कुछ तो अलग बात है। Told you, TT, you can't rule Crusher out.
No matter, yes, Imad has scored some amazing goals, but this one was a giveaway. This was a gift served on silver platter. Hmm. Him losing the ball over there, and with Mbappe, the moment Crusher got, when a lot would think that he will go for that pass, no. Instead, went for that extra pace and then an outside footer shot with that L2, and that sort of sealed the deal. And now Crusher goes for ultra attack. He knows he's got just that 1 minute, but he has got that entire momentum. And even he could not believe that Imad would give away. And suddenly, Imad quite displeased with the way he performed in those final few moments. And we might head in for a draw there. But no, a last attack, maybe for Crusher. No, again changing sides. Imad getting a chance on it, but now that ultra attacking coming into play, really the balls going into the court of Imad as he bottles that victory which you could have had. And Crusher somehow finding that draw there, that equalizer. The final few minutes remaining into the game will be enough to keep both these teams at tie, leveled up. What a matchup it was, folks. I mean, this is what I was talking about when I said this is going to be a cracker, and nothing really separating these two clubs. एंड विद दैट एक चीज तो पता चल चुका है कि एफसी गोवा मोस्ट प्रोबेबली इस बार टॉप पे फिनिश करने वाला है, क्योंकि अगर इधर 3 पॉइंट्स मिलते हैं देन जाके कुछ चांस भी रहता है कि एफसी गोवा को पीछे ढकेले लास्ट गेम जीत के नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड. बट हाँ, टेबल टॉपर कहने की काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं, बट इस गेम के रिलेटेड अगर डिस्कशन करें तो आई थिंक बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं भी है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरीके का गेम वो दिखा. एंड हम लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इमाद के वो आखिरी 20 मिनट के अंदर गोल कंसीड करना है. देखिए तीनों के तीनों गोल आखिरी 30 मिनट के अंदर आए हैं मुंबई सिटी एफसी के. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है. Yeah, of course. I mean, this and mostly like they kind of came out of those small silly mistakes. And this goal we never thought would go in, but then those two beautiful ones out of Crusher, right? He was so well prepared in those situations. Well, you see how he creates his plays, finding that room with Ronaldinho, and he just goes for the shot. And the third one, the equalizer, was sort of a little bit of a giveaway from Imad, where Imad wanted to hold on to the ball. But the first goal, was something really beautiful that Crusher scored, right? Creating that extra space. And there you go. This is where he lost the ball, and that pass on towards Mbappe, that changed it all. And then when you would think that he might go pass it over on towards Eusebio, no, he does not do that. Crusher is not one of those players. And he instead takes his shot, an outside footer for the finish, and even he's surprised, like, I scored. Wow, I'm suddenly back into the game. Because let's be honest, like Imad was playing a better FIFA where Crusher was trying to catch up to him, but eventually Imad kind of started making those silly mistakes over which Crusher ensured that he would capitalize. As we take a look at the scorecard, folks, at a very interesting matchup. I absolutely loved every single second of this game. The first game began with Saki winning his matchup, giving them that early lead, but then Northeast United FC just took over. And then it was a showdown between Imad and Crusher. Sparks flew, the clouds were colliding against each other, thunder rumbling around the lands, but nothing separating these two giants. And I'm sort of starting to think, who's going to be the MVP of this game? Is it going to be Saki? Is it going to be Crusher? Is it going to be Imad? Who? Let's find out. लेट्स सी कौन होने वाले हैं एमवीपी. मे बी सैकी हो भी सकते हैं क्योंकि वो अपना गेम जीते थे, बट नो, इट इज क्रशर. एंड ये देखिए, ये कहने की बहुत ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस है, और जिस तरीके से कमबैक उन्होंने किए थे आखिरी मोमेंट पे, वेल डिजर्व्ड. क्योंकि आखिरी मोमेंट पे अगर वो 3 गोल्स, क्योंकि उनका तो गेम ही आया था वो आखिरी 30 मिनट के अंदर जब खुलते हुए दिखे इधर इमाद के डिफेंस को, और 3 गोल स्कोर करना आखिरी मोमेंट पे और अपने क्लब को बचाना, कि अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा एक बेहतरीन मूव. एंड आई थिंक इससे एक चीज तो कह सकते हैं
कि क्रशर एंड पूरा मुंबई सिटी एफसी क्लब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा. Yeah, for sure. But now, as we take a look at the leaderboard, I mean, you can see the top four quite solid, quite intact. But the fifth and sixth, Hyderabad FC, right now, hanging by a margin along with Chennai FC. We've seen, yesterday's games, barely just scraping through. Kerala Blasters FC also will be really happy with that win. ATK Mohun Bagan at that eighth spot right now. Now, the next matchup between Kerala Blasters FC and Chennai FC, a very crucial one, and the one between ATK Mohun Bagan and Hyderabad FC will decide a lot because 9, 10th, and 11, I think it is already lights out. Odisha FC, we beat them a due last night. Jamshedpur FC went off with a win and created the biggest upset. And East Bengal FC, it's been a while that we haven't seen them. But the remainder 2 days, we've got fixtures live for them. And I don't think, no matter how much they try, they can just merely get to 10 points, even if they consider, and that too considering if they win both their games. And looking at their form, it's kind of less likely to happen, but you never know. An upset maybe later on could be there, but they've got matches against the big dogs. So that is also there. But whatever the case is, but folks, we are finally done with the matchups of for the evening. Right now, we're going to take a little bit of an extra break. We're going to meet you next on the 25th of April. So book your calendars till then, because you will have those penultimate days of the league stage action, and that is going to be absolutely powered back. Till then, you guys take care and have a good night.